Hey guys, what's up and welcome to episode 10 of Hogwarts Legacy। तो लास्ट एपिसोड में अपन ने चार नए स्पेल सीखे थे। दो प्रोफेसर शार्प से सीखे थे, एक सेबेस्टियन ने सिखाया था जो काइंड ऑफ फॉरबिडन स्पेल है, एंड एक अपन ने यूटिलिटी स्पेल सीखा था हर्बोलॉजी क्लास से। सो स्पेल्स अगर मैं दिखाऊँ जो अपन ने सीखा, तो ये सेबेस्टियन ने सिखाया था। इसका नाम कॉन्फ्रिंगो। बेसिकली तुम्हारे एक रेंज्ड फायर अटैक है, तुम्हारे इंसेंड्रो की तरह उतना डैमेज नहीं करता है, बट ये तुम दूर से कर सकते हो। एक और दूसरा रेंज्ड अटैक जो खुला है डिफेंडो, ये ऑन द अदर हैंड ज़्यादा डैमेज करता है। इसके अलावा अपन ने एक डिपल्सो खोला जो कि एक फोर्स स्पेल है। बेसिकली तुम्हारे पास एक्यो था जो चीज़ों को तुम्हारे तरफ खींचता था, तो डिपल्सो जो है ये तुमसे दूर फेंकता है चीज़ों को। एंड फिर फाइनली विंगार्डियम लेवियोसा। तो विंगार्डियम लेवियोसा जो है ये थोड़ा सा फेमस स्पेल है, ये मूवी वगैरह में था। ये एक यूटिलिटी स्पेल है, तो आई गेस पजल सॉल्व वगैरह करने में ये अपने काम आएगा। लेवियोसा जो था, जो अपने पास पहले था, ये तुम्हारा एक कंट्रोल स्पेल है जो तुम कॉम्बैट में यूज़ कर सकते हो। ये यूटिलिटी स्पेल है, ये तुम कॉम्बैट में यूज़ नहीं कर सकते। अदर देन दैट अभी अपना मेन मिशन प्रोफेसर फिक्स से मिलने जाना है। आई गेस कुछ एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड होने वाला है आज के एपिसोड में। तो चलते प्रोफेसर फिक्स से मिलते हैं। If I had to pick a favorite professor, I'd choose Garlic. Underneath that chip persona lies a brilliant. आई थिंक प्रोफेसर फिक को वो लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता, अपन जिधर गए थे तो उस बारे में बताना पड़ेगा। अरे मैं उल्टा आ गया। प्रोफेसर लाइब्रेरी में जो अपन, लाइब्रेरी नहीं सॉरी, मैप रूम के बारे में नहीं पता। एंड उधर जो प्रोफेसर रैकम अपन को दिखे थे वो पिक्चर के अंदर, उसने बोला था कि वो बुक जो मिस्टीरियस बुक है उसे यहाँ पे लेके आने के लिए। एंड वो बुक प्रोफेसर फिक के पास है। आई होप सो अभी भी उन्हीं उन्हीं के पास है, पता चला कोई और ले गया हो। I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor, so much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. मैप रूम जा रहे हैं अपन वापस। The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. पीव्स वो गोस्ट का नाम है जो कलरफुल कपड़े पहन के घूमते रहते हैं। This looks promising.
Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. आई थिंक जो स्कूल के पास एक टावर था ना टूटा फूटा सा वो है शायद नॉट श्योर I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. ओके ये ट्रायल्स बट एग्जैक्टली किधर है How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. फ्लिपेंडो स्पेल्स अपन ने अभी ये कुछ सीख लिया है डिफेंडो कास्ट अ स्लाइस स्पेल
Impact enemies to strike additional targets. Casting repulsor releases an additional blast directly around you. Infringo Impact produces fiery bolts that seeks enemy targets. डार्क वाले में क्या ये कभी कुछ अनलॉक नहीं हुआ ना. Defeating a cursed enemy restores some of your health. बहुत कम हेल्थ रिस्टोर हो रहा है. A cursed effect remains on an enemy for a longer period of time. Curse effect करता है क्या? I think damage बढ़ता है ना. Cursed enemies take increased damage. हाँ, cursed enemies take increased damage. Dealing damage to a cursed target inflicts damage to all cursed target. ये वाला एक उठा लेता है. बाकी स्पेल्स में इनमें से कुछ लेना चाहता हूँ, लेकिन आई गेस ये जो 3 है ना, इनका भी अनलॉक होने का वेट कर दे तो काइंड ऑफ अपन को पता चल जाएगा कि अपन को सबसे पसंद, मतलब मुझे पर्सनली फेवरेट कौन सा लग रहा है, तो उसको मैं अपग्रेड करूँ. अबे प्रोफेसर किधर गया अपना? ओ भाई ये किधर गया ये? ये अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पे फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर रखा है. यही मैं कर रहा था पिछले नहीं, उसके पिछले एपिसोड में जब अपन को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट मिल गया था ना, उसके रूम ऑफ रिक्वायरमेंट एंड ब्रूम मिल गया था मुझे, तो मैं मैक्सिमम जो दूर दूर के लोकेशन है वहाँ का फास्ट ट्रैवल अनलॉक किया मैंने. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. फ्रीजिंग स्पेल, ओके. दो असाइनमेंट है अपने पास, लेकिन फिलहाल अभी ये मिशन पे फोकस करते हैं. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Reaching an enemy undetected allows you to cast Petrifius Totalis. Yeah, basically ये मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया था. तुम बेसिकली जब अनडिटेक्टेड पास में जाते हो ना, तो ये स्पेल यूज़ कर सकते हो. ये तुम्हारा काइंड ऑफ एक डिफ़ॉल्ट स्पेल है, ये अलग से इक्विप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तुम्हें जस्ट बस उनके पास पहुंचना होता है. Stay hidden and cast Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. बहुत सारे हैं यहाँ पे. There must be something here. Ramrock said Totalis. ऐसे तुम जो लोग स्टेल्थ बिल्ड बना रहे हैं ना, स्टेल्थ बिल्ड में आई गेस 4 ही स्किल्स अनलॉक करने के लिए, 4 या 5, वो अनलॉक करके काफ़ी ओपी हो सकता है. Ramrock said so. बट मुझे पर्सनली मतलब इसमें स्टेल्थ खेलना उतना पसंद नहीं है मैजिक वाले गेम में. वो 2 बंदे हैं, तुम्हारे पास एक अपग्रेड है जिसमें पास में खड़े दोनों बंदों पे ये स्पेल वर्क करता है, बट मैंने अपग्रेड लिया नहीं है. Suppose it could get a bit boring.
तो वेट करते उसके दूर जाने का, क्योंकि अभी मैंने किया ना तो एक बंदा डिटेक्ट कर ही लेगा अपन को। Bring me a dozen humans to back. Revelio. इन्वेस्टिगेट द गॉब्लिन प्रेजेंस, बट क्या इन्वेस्टिगेट करूँ? यहाँ पे कुछ अंदर जाना है क्या इसके? आई डोंट थिंक अपन उसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। Moment. Not quiet enough. Incendio. Accio. Expelliarmus. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Investigate the goblin presence. Revelio. Oi! I will draw blood. Come here, you. You won't get away with that. I shall avenge your death. What an unfortunate disappointment! Can't imagine the goblins know about the trials. They know that something is significant about this place, though. There's a tower. Looks like we found the entrance. अंदर कैसे जाएंगे exactly? It's locked. Oh, कैसे खोला इसने? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Wait, चाय पी रहा? I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Oh, Rackham. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. अच्छा अकेले करना पड़ेगा. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however,
You've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe. Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. अच्छा, जो रैनरॉक उसके फॉलोवर्स हैं वो गॉब्लिन्स हैं. मैंने आई गेस कुछ एपिसोड पहले Reservoir of ancient उन्हें magic. Downstairs, near the entry. एज अ एल्फ करके बोला था, तो वो मैंने कंफ्यूज होकर गलती से बोला था. और जब मैंने बोला था तब मैं सोच भी रहा था कि एल्फ छोटे से थोड़ी ना होते हैं. फिर अभी जब इसने गॉब्लिन्स बोला ना, मुझे बाद में क्लिक किया, हाँ गॉब्लिन्स है. Revelio. इधर एंट्रेंस पे बोला ना इसने, नहीं. ओ, सो ये ट्रायल है आई गेस. एंटर परसिवल रैकम्स, ये ट्रायल है. सो इज इट गोना बी फाइटिंग? मुझे लग रहा है स्टैचूज से लड़ना होगा. देखते हैं कि पजल होने वाला है, पता नहीं क्या है. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. ग्रिंगॉट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन वही रहेगा. मुझे लग रहा है स्टैचूज रहेंगे. वो आर्मर पहने हुए स्टैचूज होते हैं ना. That must have done something. Best have a look around. वही. ओके, मुझे लगा नीचे गिर रहा है. एक सेकंड के लिए मुझे लगा था नीचे गिर रहा है उस स्टेयर्स. More traces of ancient magic. Something must be different. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Expelliarmus! Incendio! Potato! Stupefy! Levioso! Accio! Defender! Confringo! Repulsor! और होने चाहिए ना, कम थे. मैं टोटली एक्सपेक्ट कर रहा था कि और These look आएंगे. familiar. Accio! एक सेकंड, उधर जाने से पहले वहाँ पे एक चेस्ट है.
Accio! अच्छा वीगन वर्ल्ड पोशन है क्या उसमें भी? हाँ ये एक हिडन रूम What did था। that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. More statues. Expelliarmus! Leviosa! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Defendo! Confringo! Accio! Leviosa! Expelliarmus! Not making this easy on me. मैंने वो जो कि अपग्रेड लिया है ना कि अपन एक्सपेलियमस यूज़ करने के बाद जो एनिमी का वेपन है वो उन पे फेंक के मार सकते हैं। आई थिंक काफ़ी यूज़फुल आ रहा है वो, स्पेशली ये जो गॉब्लिन्स एंड ये जो आर्मर्ड एनिमीज़ हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी यूज़फुल आ रहा है क्योंकि उसका डैमेज काफ़ी बढ़िया है। जो नए स्पेल्स अपन को मिले हैं ना कॉन्फ्रिंगो डुपल्सो वगैरह हो गया, उनकी थोड़ी सी कॉम्बोज देखने पड़ेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं एक I दूसरे के presume साथ। I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio! What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. ओके ये इस तरफ आ चुका है अभी आई गेस। नहीं वो मुझे लग रहा है अभी अपन ऊपर जाके ना उसको एक्सेस करते आना चाहिए। नहीं यहाँ पे वो ब्रिज वापस कैसे बन रहा है वो बनाना पड़ेगा। हाँ बन गया। नहीं बना वो यहाँ से निकलना I need to पड़ेगा। see how the room changes when I move in and out of the यस archway. यस 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 अब हो गया। Accio! वहाँ पे एक चेस्ट है बट उसको कैसे लेंगे, वहाँ पे कुछ खींचने ऐसा है नहीं। रहने देते उसको, अब उस पर ज़्यादा दिमाग लगाए मुझे नहीं लग रहा उस पर कुछ ऐसा बहुत अच्छा होगा। I'll never get used to these floors.
Expelliarmus! Confringo! Defendo! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Leviosa! Confringo! Defender! अरे Expelliarmus! Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Defendo! Leviosa! Depulso! Expelliarmus! Accio! Incendio! Leviosa! दो बार एचपी अपने एकदम खत्म होते होते बचे पर तो एक और अटैक पड़ जाता तो मर जाते। अरे नहीं, क्या होगा वो ठीक है। मुझे लगा नीचे गिरे तो भी स्टार्टिंग से करना पड़ेगा क्या। Accio! Accio! लोकेशन थोड़ा सा Accio! बढ़िया। ये कितना बड़ा एरिया है, ये खत्म नहीं हुआ क्या फर्स्ट ट्रायल? मैं कैसे एक और फाइनल सेट ऑफ एनिमी या हीलिंग दिया तो फाइनल सेट ऑफ एनिमीज होंगे अभी। Don't like the look of this. Confringo! Defendo! Levioso! Repulso!
Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Protego. Stupefy. Incendio. ओ भाई Expelliarmus. Accio. Incendio. Defender. Confringo. ये बचा अकेला Accio. Expelliarmus. बस ये क्या अरे भाई फाइनल बॉस Incendio. Defender. Confringo. Leviosa. Repulsor. Expelliarmus. Expelliarmus. Defender. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Defender. Confringo. Repulsor. Leviosa. Incendio. मैं इसको कुछ नहीं कर सकता मैं वही देखना चाहता था कि क्या मैं ब्लॉक वगैरह कर सकता हूँ क्या Incendio. Accio. Leviosa. ओ उस पे लेवियोसो करना है ठीक है समझ में आ गया Defender. Confringo. उस वाले पे लेवियोसो करके मारना है Accio. Incendio. Leviosa. हाँ Defender. Confringo. Repulsor. Leviosa. Confringo. Leviosa. Repulsor. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Accio. Incendio. Defender. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Defender. Confringo. Confringo. There we go. गेम का तुम बोल सकते हो सेकंड बॉस फाइट है फर्स्ट वो ट्रोल वाला था जो अपन ने हॉग्समीड में किया था What a relief. आई थिंक उतने ज़्यादा बॉसेस हैं नहीं शायद रैनरॉक एक बॉस होगा रैनरॉक के साथ एक ह्यूमन भी था ना आरसी नाम था उसका विज़र्ड जो था वो एक बॉस होगा Another pensive. एंड उसके अलावा फिर ऐसे कुछ बॉसेस होंगे एक सेकेंड पेंसिव यानी कि वही मेमोरी दिखाएगा उससे पहले अपन ने जो उठाई चीज़ है इनका किसी का लेवल देख लेते हैं ये सब तो बेकार है ये सब बेचने वाला हूँ मैं तुम्हें ये दिख रहा होगा देखो इस पे एक ट्रेट लगा हुआ है इंक्रीज डैमेज विद एंशिएंट मैजिक थ्रो तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है था जब मैंने ये उठाया था ना गियर मैंने ये लगाया नहीं है तो अपन को अभी तक वो एबिलिटी नहीं मिली है कि जिससे अपन ट्रेट्स लगा सके
ये वाला लॉक्ड है। $41, $44, $51, या ये किसका स्टैचू है? रकम का स्टैचू तो नहीं लग रहा। आई थिंक ऐसे ही रैंडम स्टैचू है। Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. इससे डर रहा है ये विलेन बन जाती है क्या बाद में? मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. मुझे ऐसा लगता है ये मतलब इसेडोरा डार्क विच या मतलब कोई विलेन बन जाती है। ऐसा कुछ होगा, देखते हैं। Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? वो वापस टाइम लीप हो गया। Pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. तो ये सीधा अपन को मैप चेम्बर में लाके पटक देगा। तो आई गेस इसे 4 ट्रायल है बोले ना, तो मुझे लग रहा है 4 ट्रायल में जो भी प्रोफेसर रैकम एंड जो एंशिएंट मैजिक से रिलेटेड बैक स्टोरी है वो पूरा कवर करेंगे शायद। बट रैनरॉक ये मैजिक के पीछे क्यों पड़ा है वो अभी तक नहीं पता। रैनरॉक का कनेक्शन नहीं समझ रहा अभी तक। तो एक और आ गया टीचर What प्रोफेसर। have we here?
I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. तो चार्ल्स Before you go... अच्छा, इसका नाम चार्ल्स रूकवुड है एंड तुम्हें पता होगा रैनरॉक के साथ एक विज़र्ड था जिसका नाम विक्टर रूकवुड है. तो पता नहीं इनका कुछ कनेक्शन है क्या, वो बाद में ही पता चलेगा अभी स्टोरी जब प्रोग्रेस होंगी. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. कुछ अनलॉक हुआ है क्या अभी? तो सीजन चेंज हुआ, ऑटम आ गया. ऐसा हैरी पॉटर मूवीज में भी था, जैसे अलग अलग सीजन्स आते थे. यस. ओके, सवाल ये है कि अभी करना क्या है. 2 असाइनमेंट पड़े शायद अपने पास. Prepare for your search for the final. क्या prepare for your search for the final keeper. ये सारे आई थिंक अभी अनलॉक हुए नहीं है मिशन. फ्लिपेंडो ग्लेशियस. ग्लेशियस सुनने में अच्छा लग रहा है. पॉप बलून्स ओवर हॉगवर्ट्स स्टेशन 5. पॉप बलून्स अराउंड द क्विडिच पिच. ग्रो एंड हार्वेस्ट फ्लूक वीड. इसके लिए अपन को लार्ज पॉट चाहिए होगा. फ्लूकवीड मैंने खरीद तो लिया है. एक्वायर ऑल 3 कॉम्बैट प्लान्स एंड यूज देम साइमल्टेनियसली. कॉम्बैट प्लान्स तो तीनों है अपने पास, तो उसका कोई इतना सीन नहीं है. ये बलून का क्या हिसाब है देखें एक बार, मैंने अभी तक नहीं किया है. I should ask Sirona. I've got
Spectacular news! The broom upgrade's ready. Ha! Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. वो काफ़ी सारी चीज़ अनलॉक हुई है। एक काम करते हैं अपन, आज का एपिसोड रैप अप करने से पहले हॉग्समीड पे जाके सबसे पहले ब्रूम अपग्रेड कर लेते हैं। Hogsmeade, here I come. वो एम्बियंस चेंज हो गया, तुमने नोटिस किया? Revelio. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. पहले चीज़ें बेचते अपने। जो भी रेड कलर का दिख रहा है सब बेच दिया मैंने। लेजेंडरी वाले थोड़े से बचा के रखे, ये भी बेचो, क्योंकि आई गेस जल्दी अपना अपग्रेड स्लॉट अगर खुल गया ना तो अपन 3 बार अपग्रेड कर सकते हैं हर एक ईयर को। एन अनाउंसमेंट दैट कैन इंक्रीज योर ब्रूम्स एक्सेलरेशन एंड स्पीड। सवाल ये इसकी ज़रूरत है क्या? ले लेते हैं। You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Okay. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for Broom Flight. So Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. क्या एक और अपन को ब्रूम वाला मिशन मिला। एक सेकंड चेक करेगी क्या मैं पॉट खरीद सकते हो क्या, बिग पॉट, क्योंकि वो एक अपन को एक प्लांट उगाना है ना, तो बिग पॉट लगेगा अपन को। यूज टू प्रोड्यूस मूनस्टोन नहीं, अच्छा ये रहा टेबल विद अ लार्ज पॉट। हाँ, Nothing like finding just the right thing, is there? सारे पैसे खत्म हो गए। एक काम करते हैं फिर, एपिसोड रैप अप करने से पहले मे बी ये ब्रूम वाला मिशन कर लेते हैं। ये जो अपग्रेड वाला मिशन है ना, है किधर ये? अरे बढ़िया, अपना पास में ही चेक पॉइंट है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में जितने भी टीचर्स के असाइनमेंट है वो सब कर लेंगे। आई गेस 2 या 3 असाइनमेंट अपने पास। उसके अलावा एक और रैंडम बंदे का कोई मैसेज आया था कुछ मून करके, उससे मैं पहले मिला नहीं हूँ एंड आई डोंट थिंक वो हॉगवर्ट्स का टीचर है। अपने ये आउल पोस्ट में दिखेगा, एक सेकेंड। ये बंदा, हेलो, आई होप यू विल कम एंड सी मी अबाउट प्रेसिंग एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल ग्लैडविन मून। आई डोंट थिंक ये प्रोफेसर हॉगवर्ट्स केयर टेकर। अच्छा, आई थिंक ये जैसे हैग्रिड है ना वैसा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
मे भी कुछ हो सकता है बीस्ट वगैरह से रिलेटेड हो, जो एनिमल्स है ना, कि मुझे याद है हैग्रिड काफ़ी सारे उन चीज़ों से डील करता था. This could prove dangerous if I'm not careful. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Ravenclaw. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. So, what? You finally scared everyone else away? Oh, I have plenty of challengers. They're just not very good. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. पहला वाला इजी था, अपन ने उतना अच्छा नहीं किया था तब भी रिकॉर्ड टूट गया था. ये वाला मे भी टफ हो सकता है. Made it. Excellent. I'd say that was acceptable. Brilliant. आई थिंक वो गोल्डन रिंग से जब अपन गुजरते हैं ना, अपनी स्पीड बढ़ जाती है. यस. Made it. Excellent. Made it. Oh, did anyone else see that? या गोल्डन रिंग जब लेते हैं ना तो स्पीड अपनी काफ़ी बढ़ जाती है थोड़ी देर के लिए. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from members of my own house. When we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our brooms, pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with merpeople. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it.
We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. So अभी फाइनली वापस उसे हॉग्समीड चलते हैं, वो बंदे को बता देते, रिपोर्ट करते, उसके बाद एंड एपिसोड रैप अप करते। आई गेस हर बार जब क्लाइमेट चेंज होता है ना तब नया रूम का अपग्रेड आएगा, क्योंकि अभी ऑटम हुआ तो अपग्रेड आया, और 2-3 क्लाइमेट होने चाहिए। एक तो विंटर है डेफिनेटली, एक होगा कोई और स्प्रिंग या समर जैसा कुछ होगा। I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Okay, Thank you there again, we go. Truly. So that wraps up the broom upgrade. And yeah, एपिसोड अपन यहीं पे रैप अप करते हैं। अगले एपिसोड में जो भी असाइनमेंट्स मिले ना अपन को वो पहले करेंगे, एंड जब वो असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपन मेन मिशंस करेंगे। तो एनीवेज अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।